Shiksha Northeast. has been plunged to Mizoram. reduce on a yearly Mizoram, basis, particularly under various activities such as salary components of teachers and teacher educators. This has given additional financial burden to the state government of the Northeast. These may be revised for small states, especially the whole Northeast state, in the existing ratio of 90:10 for all components under Samagra Shiksha scheme. Moreover, sir, the condition of appointment of teachers under Samagra Shiksha scheme may be revised at par with their counterparts under the state government, as they are the most important components for achieving desired quality education in the country. More funds may be allocated for enhancement of salary components under the scheme. Knowing Hindi for the children of Northeast is very important for national integration. In other states of India, the children could get teaching of Hindi from their own parents. Time over, Honorable Sri Prasanna Acharya. Thank you, sir. Sir, the issue I am raising is concerning the interest of the farmers of not only of Odisha, of Telangana and some few more states, sir. Sir, as you know, sir, Odisha is a paddy producing state, sir. And after the paddy is milled to rice through millers, sir, the surplus rice after consumption under the NFSA Act and other welfare schemes of central government. I have not permitted. Where are you coming to the well and then doing all this? Government of India through Food Corporation of India, sir. You want me to go against the rules? I will not do it. People of Odisha, they consume parboiled rice. No. So 95% of the rice manufactured and produced in Odisha is parboiled rice. And sir, in this KMS of 21-22, our estimated procurement of rice is about 52 lakh metric ton. State's own consumption will be 30 lakh metric ton under National Food Security Act and State Food Security Scheme and other welfare schemes, sir. Thus, we will have a surplus of 20 lakh metric ton of parboiled rice. But sir, unfortunately, this year the FCI has refused to receive any parboiled rice in the current year 21-22. Target has been issued to lift only 5 lakh metric ton of forfeited parboiled rice and 2 lakh metric ton of raw rice. As a result, sir, Odisha will be left with 15 lakh metric ton of surplus rice. So what should we do with that rice? Should we throw it to the Bay of Bengal, sir? So I urge upon the minister, sir. We had met the minister earlier also. The minister was kind enough to say that it will be considered, sir. I request the minister to kindly consider and ask the Food Corporation of India to lift all the surplus parboiled rice from Odisha. And sir, our outstanding dues about food procurement. You go to your seat. Show respect to others. The central government. I will urge upon the government to kindly release the outstanding subsidy amount as early as possible, sir. Right. Sasmit Patra. अन्य अध्यक्ष महोदय, जो मेरे वरिष्ठ नेता ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का जो रिक्वेस्ट है वो कि केंद्र सरकार सुने और पारबॉइल्ड राइस जो है सरप्लस राइस है उड़ीसा का लगभग 15 से 20 लाख मेट्रिक टन उसको प्रोक्योर करे। धन्यवाद। श्री प्रशांत नंदा। मैं भी समर्थन करता हूं। All nothing is going on record. और ये मैं कहना चाहता हूं कि the parboiled rice has been the surplus amount parboiled rice may be communicated may be taken. Right. Amar Patnaik. Sir, I support, sir, the motion moved by Mr. Prashant Nanda in the 0 hour, sir. Sir, as per the latest NSO statistics, a farmer family in Orissa earned rupees 5,112 per month from July 2018 to 19, which is the lowest in the country, sir. And as far as parboiled rice is concerned, so last year we exported $2,307 million abroad to 152 countries. So why can't the government of India lift this surplus rice of 15 million tons? Right. There is absolutely no reason whatsoever when Honorable Chief Minister of Orissa has written to the Prime Minister of this country. Sir. Right. Dr. Van Verai Kharurukhi Adaritri Banwalai ji Northeast.
schedule. Please. Well, my state, Meghalaya, had already celebrated 50 years of statehood, sir, on the 21st of January, 2022. Sir, Meghalaya comprises of two ethnic groups, Khasi, Jaintia, and the Garos, who speak different languages. But the sad part is, sir, that in spite of the demand made by the people, and a resolution was passed by the Meghalaya Legislative Assembly for the inclusion of the Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution, nothing was done, sir. Today, we are a state of 50 years, but without a recognized language. Sir, I appreciate your wishes that you used to express in this august house in favor of having members expressing themselves in the house in their own language. Sir, I take this opportunity to request you, through your good office, sir, to impress upon the government that though 50 years we are a state without a language, right, but at least on attaining 50 years of statehood, the government may recognize us by including the Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution. Thank you, sir. Thank you, Anwar Aiji. Sri Neeraj Dangi, Sri Manoj Kumar Jha. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर, एक बहुत गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए आपने मुझे मौका दिया। सर, एक वक्त आ गया अब अपने मुल्क में जब राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के फ्रेमवर्क को पुख्ता करना होगा। सर, अभी हाल में हम सब ने विजुअल्स देखे थे रेलवे की नौकरी को लेकर के, वो विजुअल्स सर रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें और ऑक्सफैम की रिपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एक साथ पढ़ें, अर्बन पॉवर्टी की बढ़ाव को देखें, रूरल पॉवर्टी की पेनिट्रेशन को देखें, तो मैं समझता हूं सर हम सबको पक्ष विपक्ष और उभय पक्ष मिल करके इस पर काम करें। जाहिर तौर पर इससे क्या हुआ है कि हमारे चुनाव में भी सर रोजगार अब मुद्दा नहीं रहा, बाकी सारे मुद्दे हैं। और अगर रोजगार को लेकर के पूरे देश का सरोकार एक नहीं हुआ सर, तो हम ज्वालामुखी के ढेर पे जाएंगे। अतः मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इस पर पुख्ता तौर पर चर्चा हो और सुनिश्चित किया जाए। जय हिंद सर। धन्यवाद मनोज जी। श्री के.सी. वेणुगोपाल, नॉट देयर। श्री विनय विश्वम, नॉट देयर। प्लीज विनय जी। Sir, everybody of us knows that the public sector is the biggest employer of this country. It serves the needs of the country, gives jobs to lakhs and lakhs of young people. But the country is facing a reality that all the public sectors are under threat and attack. The banks, the LIC, the GIC, the defense, the aviation sector, everywhere the government is in a frantic move or a frenzied move to privatize everything to that. Sir, I support the view of Atmanirbhar Bharat. If I understand that concept in the right way, I believe it is for Bharat, not for private looters. But sir, what we see today is that for the sake of the private looters, all the public sector banks, insurance companies, and everything, it is going to be given to them, the private companies and the private investors. Sir, this is causing a big fear among the people. Lakhs and lakhs of people of this country are waiting for jobs. The railways, we saw in Patna what happened. So considering their agonies, I request the government to take seriously the wage distribution of the insurance employees in the GIC, the DA issue of the bank employees. Such issues and the defense employees issues are so vital. Right. So I request the government to take these issues very seriously. Thank you, Vinay ji. This is the immediately. Thank you, sir. Issue of employees' welfare, well, privatization, that is the issue. Okay. Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir. Ma. Sir, thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me to raise a very important issue, something that our founder, Shri Bala Sahib Thackeray ji, was committed to, and that is rehabilitation of Kashmiri Pandits. Sir, it has been 32 years of struggle, of living in exile, and continued to be denied their right to return back home. In 2015, when the government had come into power, they had promised construction of 6,000 transit accommodations for Kashmiri Pandits.
Unfortunately, and as per the department-related Parliamentary Standing Committee of Home Affairs, the work has been progressing very slowly, and only 15% of the work has been completed till date. This comes at a time when the struggle has been ongoing for 32 years, and they have been living their lives in exile for more than 3 decades. It is unfortunate that despite the government's big promises, post-removal of Article 370, after allowing people from outside the state to buy land there, Kashmiri Pandits are denied their homes. Therefore, through this House and through you, sir, I urge the government to expedite the construction of transit accommodation units and to facilitate the return, rehabilitation and empowerment of the Kashmiri Pandit community. They have been fighting a battle to go back home for the past 32 years. Right, the government must ensure their safe return and a dignified life for them. Thank you so much. Thank you, Priyanka ji. Sri Neeraj Dangi. के साथ में ये महत्वपूर्ण मुद्दा मैं सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। देश में 1998 में पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर रोड सेस के भुगतान का प्रावधान लागू किया गया था। वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से रोड सेस का नाम बदलकर रोड सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कर दिया गया एवं इसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य और ग्रामीण सड़कों एवं अन्य बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में सुधार के साथ साथ रेलवे परियोजनाओं के विकास और रखरखाव को भी शामिल किया गया। इन उद्देश्यों के लिए पेट्रोल और डीजल ऑयल पर सेस, एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल कस्टम्स ड्यूटी लागू की गई, परंतु रेल मंत्रालय के आदेश दिनांक 31/12/2021 द्वारा नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस (SDF) वसूलने का फैसला किया गया। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है उनके लिए यात्रियों से 10 रुपए से 50 रुपए तक का चार्ज वसूला जाएगा। बताया गया कि यह कदम रेलवे को और स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पैसा जुटाने में मदद के लिए किया गया है। जब रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत एकत्रित किए जाने वाली राशि में रेलवे परियोजना का विकास और रखरखाव शामिल है तो फिर इस स्टेशन डेवलपमेंट फीस (SDF) का क्या औचित्य? केंद्र सरकार पेट्रोल पर सेस और एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32.9 रुपए प्रति लीटर वसूल रही है, जिसमें 18 रुपए प्रति लीटर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस शामिल है। इस प्रकार रेल मंत्रालय का यह तुगलकी फरमान गैरवाजिब है और रेल यात्रियों पर अनावश्यक भार डालने वाला है, जिसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। ये तुगलक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, देख लीजिए। श्री मोपी देवी वेंकट रमण राव। Thank you, sir. It is learned to that of late the freight charges for shipping containers sea exports increased to a tune of 40–45%, and for some containers is more than double, sir. On the other side, there is a severe shortage of containers causing huge delay in shipping. Since last year, there has been fluctuation in the freight rates, and the businessmen reporting that the current rates are the highest ever. This is an unprecedented rise, and there is a shortage of containers too, making the situation more worse. For instance, about 6 months ago, the export flights for destination like Dubai was about $200, which is now $1,500, sir. In case of USA, the earlier cost was about $2,000 to $2,500 per container, and now it has gone to $12,000, which is almost 6 times, sir. It is obvious that this scenario is leading to a drop in the export and also huge increase in investments, and there is a possibility that the businessmen may switch to local sales. Hence, request the central government to take a serious note in the happenings and intervenes in the issue to sort it out and bring the exports to normalcy in the best interest of the sector and nation. Thank you, sir. Right, Ramaji. M.V. Shreyams Kumar, please. So the government has recently taken a decision to increase the GST from 5 to 12% on footwear costing below 1,000 rupees. So footwear industry is a small-scale industry which employs more than 3 lakh people in Kerala, directly and indirectly. And so it's a labor-intensive industry which provides employment to large-scale women in Kerala, sir, and elsewhere in the country. So earlier, before the introduction of GST, this industry was exempted from excise and other levies.
The increase in GST on footwear has, has made the industry struggle because of unfavorable condition, unavailability of raw materials and things like that. So I request the government to reduce the GST from 12% to 5%. Thank you, sir. Thank you, James Kumarji. Srimati Chanta Chetri. Nahi. Sri Ajay Pratap Singh. Time is 1 minute only. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सीधी जिले में स्थित संजय गांधी टाइगर रिजर्व एवं दुबरी नेशनल पार्क की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति जी, संजय टाइगर रिजर्व एवं दुबरी नेशनल पार्क सीधी जिले के कुसमी विकास खंड में स्थित है और इसके अंतर्गत लगभग 40 गांव स्थित हैं। Time is over, Ajay Pratap ji. Honorable members, today we could take up 14 zero-hour within this 30 minutes. If others have cooperated, we could have completed the remaining 3 also. I would like to make an observation and also appeal. People were feeling happy that the Rajya Sabha is functioning without disruption and members are having their say. But today, unfortunately, one has to go through the rules. The rules says 267 has to be admitted by the chairman. I have not admitted because that is not an issue before either the central government or before the parliament. It's an issue there in the state. And that also I said you can discuss it during the president's address because they want to say something about the state. Whether one is in agreement with them or not, but they have got every right. But suddenly saying that no, our issue must be taken up, other jurors, forget them, and then is anti-democrat, and then not permitted chair. You are criticizing governor, you are criticizing the center, you are criticizing the chair also, and criticizing the house also. I request all of you, please, and in between they say LOP. LOP can speak only if there is an order in the house. And your own members are creating disorder. I can't help it. Please understand. I have sympathy for everybody. You are seeing all this 0 hour and also question hour. All shades are being accommodated to the extent possible. So my appeal is, see to it that we function as per the rules, regulations and guidance from the chair. The question hour, Sri Ramnath. श्री रामनाथ ठाकुर जी। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं। एक जवाब रिप्लाईज सभा पटल पर रख दिया गया। अब आप पूछे, पहला सप्लीमेंट्री पूछें। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय को ओवरब्रिज बनाने के लिए बिहार राज्य में कितनी राशि बची हुई है? अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2014 से 19 तक 1700 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग गेट थे और बिहार के लिए उन्होंने जो प्रश्न पूछा है राशि के बारे में, अध्यक्ष महोदय, उनके क्वेश्चन में तो कुछ आया नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछा है आरओबी के बारे में कि कर्पूरी ग्राम में आरओबी सरकार बनाने वाली है क्या? राज्य सरकार से ऐसा कोई आरओबी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। कर्पूरी ग्राम स्टेशन जो सोनपुर मंडल में आता है, उस 53 गाड़ियाँ उस स्टेशन से चलती है। अध्यक्ष महोदय, आरओबी बनाने का जो नियम है, अगर 1 लाख से ज़्यादा घनत्व है तो राज्य सरकार से 50% शेयर से वहाँ पर आरओबी बनाया जाता है, लेकिन इसका घनत्व 50,000 से कम होने के कारण यहाँ पर आरओबी कुछ बनाया नहीं।
अध्यक्ष महाराज, बिहार के लिए आरओबी बनाने के लिए जो राशि सरकार ने दी है मैं सदस्य को बता दूंगा। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय रामनाथ जी। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे पहले प्रश्न का तो जवाब मिला नहीं, राशि कितनी उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या कर्पूरी ग्राम ओवरब्रिज के लिए उन्होंने सर्वे कराया है कि कितनी गाड़ियां जाती आती रहती हैं। उन्होंने जो समय सीमा दिया है 1 लाख का, क्या वहां सर्वे कराया है कि कितनी गाड़ियां वहां जाती हैं और आती हैं? क्या मंत्री महोदय यह बताने का काम करेंगे? धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, हमने सर्वे कराया है। 53 गाड़ियां वहां से आवाजाही करती है और 50,000 यूनिट ट्रैफिक घनत्व जो है आज की तारीख में वहां पर है। 1 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आरओबी सरकार के साथ बात करके 50% शेयरिंग से वहाँ किया जाता है। धन्यवाद। माननीय नरहरि अमीन जी। माननीय उपसभापति महोदय, देश में पिछले 3 साल में कितने रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण हुआ, कितने ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण का कार्य प्रगति में है और निर्माण के कार्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए क्या कोई आयोजन विभाग ने किया हुआ है? एक बार में एक ही सवाल पूछना है अमीन साहब। कनेक्टेड है साहब उसके साथ। प्लीज माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, देश भर में जो आरओबी जो किए जाएंगे उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को दूंगा, लेकिन आरओबी और आरयूबी बनाने की जो पॉलिसी मैं जो पहले बता चुका हूं कि राज्य सरकार के साथ चर्चा करके हम आरओबी बनाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आरयूबी ये रेलवे अपने खर्चे से बना देती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 32 चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी पर रख दिया गया। पहला सप्लीमेंट्री चौधरी साहब। माननीय सभापति जी, मैंने किसानों के बारे में प्रश्न पूछा था और किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा रही, पूरे विदेशों में चर्चा इसकी रही। सरकार ने आश्वासन दिया था कि एमएसपी के बारे में एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसका निर्णय करेगी किसानों के साथ किस प्रकार से इंसाफ हो। लेकिन क्या मैं जानना चाहूँगा उस कमेटी का रूप क्या है और उस कमेटी में कितने लोग शामिल किए गए हैं और कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि एमएसपी के बारे में और कमेटी के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। तो जैसा कि एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी का जो कमेटी ने निर्णय लिया है उसके बारे में मैंने उत्तर में ही इनको स्पष्ट बता दिया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि जब आने वाले जो समय के अंदर जो कमेटी है उसका जो तय होगा और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एमएसपी हुई तो एमएसपी की हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट है कि हमें किसानों को मजबूत करना है। किसान के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनी हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक जो 2018 के अंदर हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना करने का निर्णय लिया और 1.5 गुना करने के बाद में उस समय जो क्रॉप थी वो 12 क्रॉप थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 24 क्रॉप तक 22 क्रॉप अभी उस पर एमएसपी मिलती है। अब जो कमेटी की बात है तो कमेटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने 19 नवंबर को कहा था कि हम एक ऐसी कमेटी का रिफॉर्म करके और करेंगे जो कि आने वाले समय में किसानों के जो मुद्दे या जो एमएसपी उसके ऊपर निर्णय हो। तो उसके लिए कमेटी के लिए हमने चुनाव आयोग को इसके लिए भेजा है और चुनाव आयोग की जो कमेटी जो है वहाँ पर से प्रस्ताव आएगा तो उसके आधार पर हम आगे उसका निर्णय लेंगे, क्योंकि चुनाव कई राज्यों के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव को देखते हुए वहाँ से परमिशन मिलने के बाद में उस कमेटी का गठन होगा। धन्यवाद। दूसरा सवाल माननीय चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से किसान खेती में अपना पैसा खर्च करता है और जितना खर्च करता है लाभ उसके अनुसार नहीं मिलता है, क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाएगी कि लागत मूल्य से अधिक किसान को आय हो और उसके बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई?
धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, लागत से डबल या लागत से अधिक किसान को इनकम हो, इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि एमएसपी जो निर्धारित की गई है वह एमएसपी पहले किसान जो 2018 से पहले या उससे पहले जो एमएसपी थी, वो एमएसपी जो लागत थी उसके लगभग उससे थोड़ी ऊपर थी, कुछ जो क्रॉप थी उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि किसानों के जीवन में हम उनको लाभकारी मूल्य और उससे अधिक हम लाभ दे सकें। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय था उसको हमने लागू किया और 1.5 गुना करते हुए बैठकर सीट पर ना बोले, 1.5 गुना किया गया। और एमएसपी पर जो मुझे खरीद की भी बताऊं तो मैं बताऊंगा आपको कि कितना परिवर्तन आया है। अभी जैसा कि पहले एमएसपी की अगर बात करें धान की, तो 2013 में एमएसपी पर 1310 रुपये थे, आज उसका 1940 रुपये एमएसपी है। वहीं अगर बाजरे की बात करें तो 1250 रुपये थे, आज एमएसपी है 2250 रुपये हो गए। ऐसे लगभग कुछ फसलों के अंदर तो 1.5 गुना एमएसपी लागत से है, कुछ फसलों में 1.5 गुना से भी अधिक हमने की है। और इससे स्पष्ट साफ जाहिर होता है कि हमने जो की है उसमें खरीद में भी हमने बढ़ाया है। और आंकड़ों के 2000 गेहूं की अगर बात करें तो 2013-14 के अंदर टोटल जो गेहूं की खरीद हुई थी जो 250 लाख मैट्रिक टन हुई थी, वह 2021 के अंदर 390 टन की खरीद की गई। वहीं अगर दलहन और तिलहन में बात करें तो सिर्फ 0.55 लाख मैट्रिक टन थी, जो बढ़कर 21 लाख मैट्रिक टन होगी, जो 3,867 लाख मैट्रिक टन है। 3,08,059 लाख मैट्रिक टन। You are not supposed to speak from the seat sitting. जो एमएसपी पर हम लगातार खरीद There is procedure for that. Please, रजनी जी, please, not allowed. लागत से 1.5 गुणे के ऊपर निर्धारित करके और किसान से खरीद करने का भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें माननीय सदस्यगण, प्लीज, अगर किसी जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में देयर आर वेज फॉर दैट, प्लीज अटेंड टू दैट, प्लीज। नो छाया वर्मा जी सर जी प्लीज, 1 मिनट। छाया जी, माननीय मंत्री जी कुछ करना चाहता हूँ। वैसे मंत्री जी ने जवाब विस्तार से एमएसपी का भी दिया, कमेटी का भी दिया। सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्यवाही करें। धन्यवाद। छाया जी। सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं आपके माध्यम से, 2022 में आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन लागत, किसानों के लागत मूल्य बहुत बढ़ गए हैं कृषि में। तो लागत में पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि लागत में वृद्धि हुई है। जहां लागत में वृद्धि हुई है तो वहीं पर हमने एमएसपी पे भी लगातार हर वर्ष हमारी कमेटी है वो लागत एमएसपी के अंदर भी उसमें बढ़ोतरी करती है। और इसी की वजह से एमएसपी का हमारे उसके अंदर जो पैरामीटर है जिसके आधार पर हम तय करते हैं उसमें लागत को आधार मानकर और जितनी किसान की लागत आती है उससे 1.5 गुना से अधिक कराने का प्रावधान है। और प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी की बैठक अध्यक्षता में जो बैठक होती है उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जाता है। उसी के आधार पर एमएसपी के आधार पर उस पर किसान को उसकी एमएसपी मिलती है। माननीय बृजलाल जी। उपसभापति महोदय, मैं धान के किसानों के बारे में बात करना चाहता हूं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जी ने कहा है कि पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर। तो पैडी में जब तक क्वालिटी राइस का उत्पादन नहीं होगा तब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। महोदय, उत्तर प्रदेश में क्वालिटी राइस है एक बासमती, 24 जिलों में पैदा होता है और उसके लिए BDF है,
बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन। उत्तर प्रदेश में एक राइस है काला नमक, भगवान बुद्ध के सवाल पूछे ब्रिजलाल जी। सवाल ये सर, काला नमक राइस के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय KEDF काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने का करेंगे, जिससे काला नमक धन्यवाद ग्रोवर हैं उनको फायदा। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि काला नमक की बात की है, ICR के द्वारा लगातार ऐसी कई वैरायटियां हैं जो नई वैरायटियां आ रही है जिससे किसान की यील्ड बढ़े और उसमें क्वालिटी भी हो। तो इस दृष्टि से काला नमक की बात है, तो इन्होंने जो की है तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से हम यही कह सकते हैं कि बहुत अच्छी वैरायटी है वास्तव में। और काला नमक उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी वहाँ के लोगों की प्रचलन भी है। तो काला नमक के लिए बिल्कुल वो वैरायटी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसके लिए ICR है वो हर समय ऐसी नई वैरायटियाँ और ऐसी वैरायटियों को ईजाद करने के लिए प्रयास करती है, और इसके लिए भी हम यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर अमर पटनायक जी। Thank you, sir. Sir, the main point in the MS Swaminathan committee report is how do you calculate the MSP? Even before legalizing MSP, it is important to know how do you calculate MSP. Whether it is going to be A2 plus FL, that is family labor, or it is going to be the entire composite cost, which is C2. The government should make it very clear whether they are going to adopt C2 as the price and then calculate the 50% extra. Number one. So in continuation, sir, unless we do that, the farmers will not only not be able to increase their income, but will leave farming. That is the main point. They will be winning away from farming. Please question. Question is that's the question, sir. Thank you. माननीय उपसभापति जी, जैसा कि C2 और A2 की बात की है, जैसा कि अभी MSP जो निर्धारित की जाती है वो A2 प्लस FL के ऊपर करके, ताकि किसानों को जो उनकी वास्तविक लागत है या उनका जितना भी खेत के अंदर कॉस्ट आती है उन सबको जोड़कर इसके आधार पर एक कमेटी फॉर्म करके उसकी निर्धारित करती है। तो उसके अंदर जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश और उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही ये एक फार्मूला बनाया गया और उस फार्मूले के ऊपर उसकी कॉस्ट जो आती है उसके ऊपर किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट है कि किसान को किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं हो, इस दृष्टि से ये लागू किया गया और MSP को 1.5 गुना करने के पीछे हेतु भी यही है। और जैसा कि इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का पैसा है वो देना या उनको FPO बनाकर कैसे स्ट्रेंथ करें, इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हम सबके महत्वपूर्ण और हमारे प्रमुखता में है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 33 श्रीमती झरना दास वैद्य जी। Yes, question number 33. The answer is laid on the table of the House. First supplementary झरना जी। Sir, thank you sir. मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री, गत 5 वर्षों में सरकार ने कौन कौन सी सोशल मीडिया कंपनी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, वो मैं मंत्री से आपका माध्यम से मंत्री से जानना चाहती हूँ। सांसद महोदया ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है माननीय सभापति जी। सोशल मीडिया आज ऑल प्रेवलेंट है हमारी लाइफ में। सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया को किस तरह से सेफ बनाना है, अकाउंटेबल रखना है, किस तरह से हमारे जो नौजवान सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, कभी कभी उसमें उसका मिसयूज़ भी हो जाता है, वो कैसे रोकना है, इसके लिए सरकार ने 2021 में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरमीडिएरी रूल्स का प्रस्ताव रखा था और उसको गाइडलाइंस को इश्यू किया था सर। उसके हिसाब से 5 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सेकंड, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तीसरा, ग्रीवेंस ऑफिसर, किसी की भी कोई ग्रीवेंस हो उसको रखने के लिए वो भी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फिजिकल कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए इंडिया में और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट होना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा, करीब आपके प्रश्न के हिसाब से करीब जितने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन सब का मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो और भी कई सांसद साथियों ने पूछे हैं।
जैसे ही कोई पॉइंट हमारे नज़र में आता है, संज्ञान में आता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। यस सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, क्या सरकार के प्राप्त जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत डाटा मंत्री जी के पास उपलब्ध है तो जरा कृपया करके बताइए। से सभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को हर महीने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करनी होती है। तो हम उसको रिपोर्ट को अपने पास नहीं मंगाते, पब्लिश करें, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट वे में सभी नागरिक उसको देख सकें, समझ सकें, और किसी को कोई भी अगर ग्रीवेंस हो, अगर कोई भी पॉइंट हो, तो उस पॉइंट को ग्रीवेंस ऑफिसर के पास भी रेज कर सके। इसीलिए जिन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का आपने नाम लिए, उन सब की मेटा, फेसबुक जो पहले था, ट्विटर, जो भी आपने नाम लिए, इन सब की कंप्लायंस रिपोर्ट्स में डाउनलोड करके लेके आए, वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। माननीय सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या बात सही है कि IT डिपार्टमेंट has asked the Indian Computer Emergency Response Team to form a high-level committee to investigate complaints that a few websites had hosted doctored lewd pictures and objectionable comments aimed at insulting and auctioning Muslim women. तो ऐसे वेबसाइट्स के खिलाफ में या वैसे लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की सरकार ने, यह मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत ही संवेदना वाला विषय है, और महिलाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये हमारे लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। किसी भी तरीके से इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और उसमें कोई भी रिलीजन, आप सुनिए ना प्लीज, कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है। जितने भी अभी तक पॉइंट आए, उन सब पॉइंट्स पे तुरंत कार्रवाई की गई है। एक जितनी हमारी जानकारी के हिसाब से आते ही उस पर कार्रवाई की। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहूँगा माननीय सभापति जी। हम जब भी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप हमारे साथी लगाते हैं विपक्ष के कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं उसके ऊपर आहत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सोसाइटी में एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा, एक कंसेंसस लाना ही पड़ेगा कि जो हमारे भविष्य के नौजवानों के, हमारी महिला, हमारी बहनों, हमारी माँओं, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए जो करना है, अकाउंटेबल सोशल मीडिया को करना ही पड़ेगा। उसको अगर सेफ रखना है तो उसको उन नियमों को और ताकत देनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमें अगर हमारे ऊपर अगर आप ये आरोप लगाएंगे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को तोड़ रहे हो, वो रोक रहे हो, तो वो गलत आरोप है। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें सब मिलके हमें एक नई दिशा में जाना होगा। धन्यवाद। माननीय अब्दुल वहाब जी। माननीय अब्दुल वहाब जी, प्लीज 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 प्लीज, इट्स अ क्वेश्चन मैडम, यू हैव नॉट गिवन योर नेम। Please, please, please. No, there is a procedure, please. मैं मुद्दा उठाया था, मंथ ऑफ जुलाई में उठाया था। It has nothing to do with freedom of speech, sir. It is about safety of women in digital spaces. I had specifically mentioned these two issues, पर कहीं भी इस लेटर में, और मैं ये लेटर लेकर आई हूँ अश्विनी वैष्णव जी का, I respect him tremendously. But the question is, he's not even mentioned it once. Thank you. And there was no investigation. माननीय अब्दुल वहाब जी, आपका सवाल। Our question is on OTT platforms such as Netflix, Amazon and Hotstar. Whether the government is proposing any bill to oversight mechanism over the digital and OTT platform in the wake of its rapid prevalence. सर, OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स जो 2021 के हैं, उसमें ऑलरेडी उसके प्रावधान हैं। और जो पॉइंट प्रियंका जी कह रही थी, माननीय प्रियंका जी कह रही थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत वाजिब पॉइंट उठाए थे। हमारे मंत्रालय ने तुरंत हर एक पॉइंट पे एक्शन लिया है सर। ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आपने भी एक्नॉलेज किया इस बात को। हर एक पॉइंट पे तुरंत ही एक्शन लिया गया है, और एक्शन भी केवल सरफेस पे नहीं सर, उसके डीप में जाके, हर एक पॉइंट पे डीप में जाके सर्टिन का, जैसा भी माननीय सांसद श्री मोदी जी कह रहे थे, डीप में जाके सर्टिन का इस्तेमाल करके उसका
जहां तक उसका सोर्स है, रूट कॉज है, वहां तक जाके एक्शन लिया गया है। धन्यवाद। माननीय आनंद शर्मा जी, प्लीज प्लीज। कहा ना सर, आपका रूल्स में है। The Honorable Minister has explained in detail the steps taken by the government to prevent the abuse of social media. However, the challenges remain, and that is how the technology can be termed as a double-edged weapon. There are positive uses and very dangerous abuses also, some of which have been referred to. You have in part C of your reply mentioned about the implementation of the rules and the appointment of the Chief Compliance Officer, Grievance Officer and nodal persons of contacts. However, is there a verification process to check how effectively they are functioning? Two, the WhatsApp groups are created, and WhatsApp groups spread insidious messages. They inflame passions, they create riotous situations, and I'm sure that the government is aware of that. I have personally on occasions written. I've tried to contact these compliance officers. I've spoken to the secretary in your ministry personally, not through my office, but they have failed to check. I'm not blaming you, because these portals, they refuse to give you the details of the portals. So in such situation, will you have a centralized control room which can take effective action and also to block the misuse of such apps if required? Because we have referred about the freedom of expression, freedom of speech. Article 19 is very clear. It's not unrestricted. There are exceptions for the commercial media, and there are question, Mani Anand going back. Question. I've asked the question. Yes, please. Thank you. Honorable Chairman, sir, if the House has consensus, we are willing to provide even more stricter social media rules. Definitely, and I personally believe that for the protection of our citizens, we must make the rules stricter. At this point of time, we are working within the constitutional framework. So your point, the role of state and the role of center, both have to be seen in the perspective. The law enforcement agencies of the state governments, they are taking the action based on the information which goes either from certain or from IT or any other agency. There is a framework created for any cyber crime which happens all over the country. It can be reported over a central portal, and it goes to the relevant law enforcement agency. But I agree with you that we have to come forward as a society and create much more accountability for the social media. Thank you. Question number 34, Dr. Sasmit Patra. प्रश्न संख्या 34। उत्तर सभा पटल पर रखिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को पूर्ण तरह से कार्यरत करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार इस पर जोर दिया है और केंद्र सरकार को भी जताया है, और इसी संदर्भ में उनके ही इसी सोच से, इसी आवेग से ये प्रश्न आती है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2004 में कंस्टिट्यूट होती है वो कमेटी, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन रिकमेंडेशंस में से कौन से रिकमेंडेशंस को ग्रहण किए गए और कौन से रिकमेंडेशंस को काट दिए गए, और वो कारण क्या है जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशंस को काट दिए गए? धन्यवाद। सभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में से कितने रिकमेंडेशन को स्वीकार किया, कितना काट दिया गया। ये आयोग का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ, और उसके बाद में इस स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 2007 में अंतर मंत्रालय की एक कमेटी गठित की गई जिसमें 11 मंत्रालय थे। उन्होंने मिलकर जो 215 रिकमेंडेशन थी उनमें से 201 को स्वीकार किया, और उसमें से भारत सरकार ने, अभी वर्तमान की सरकार ने 200 रिकमेंडेशन के ऊपर काम प्रारंभ कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया। वहीं रही बात ऐसी, जो 215 में से जो 14 रिकमेंडेशन जो थी जो अस्वीकार की गई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय ऐसा निर्णय उस कमेटी ने क्यों लिया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही एमएसपी है।
लेकिन स्वामीनाथन जी ने उस समय एमएसपी के ऊपर कहा था कि एमएसपी किसान की लागत से कम 50% से अधिक किसान को मिले। लेकिन उस समय की कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने विकृति उत्पन्न होने का कारण देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि एमएसपी का 1.5 गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकमेंडेशन को माना जो उस समय उसकी कमेटी ने अस्वीकार किया। अब एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है और वो भी 1.5 गुने के ऊपर खरीद हो रही है। अब दूसरा मुझे इसमें एक और है कि उस समय मंत्रालय का नाम भी स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय इसको भी अस्वीकार इसलिए किया कि कल्याण करने का काम अन्य मंत्रालयों का है, कृषि मंत्रालय का नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने उसका नाम भी कृषि कल्याण मंत्रालय रखा गया। और उसके बाद में जहाँ तक खाद्य गारंटी की बात है तो वो भी उस समय खाद्य सुरक्षा की खाद्य गारंटी अधिनियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन अस्वीकार किया गया। हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत आज भी उनके सभी व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। उस समय ये भी हुआ कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात थी, तो उस समय भी इस ऑर्गेनिक खेती या जीरो बजट इसको या उस खेती को भी बढ़ाने के लिए उसमें उस समय अमान्य किया गया था। लेकिन हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने स्कीम भी लागू की और किसानों को उसको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि हमें जीरो बजट या प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। वहीं जो दूसरा एक ये है कि इसके अंदर ये भी हुआ कि पीडीएस को यूनिफाई करने की बात कही थी, उन्होंने उसको भी अस्वीकार किया। वहीं महिला समूहों को उस समय स्वामीनाथन जी ने कहा था कि महिला समूहों को और महिलाओं को, किसानों को किस तरह से हम आगे बढ़ें, पर उस दिशा के अंदर भी उन्होंने उस समय महिला के विषय पर भी अमान्य इसको अस्वीकार किया। लेकिन अभी हमारी सरकार के द्वारा एफपीओ बनाए जा रहे हैं जो स्पेशल महिलाओं के लिए बन रहे हैं, या महिला किसान उनको, और उसके साथ ही महिला किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ऐसे कई और भी हैं जो टोटल मिलाकर, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात है तो इसमें माननीय मंत्री जी की गई। कृपया ब्रीफली आंसर दें। किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का भी प्रावधान किया गया। ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ, माननीय मंत्री जी उस समय ब्रीफली आंसर दें प्लीज। सेकंड सप्लीमेंट्री। महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक एक्शन पॉइंट अभी भी छूटा हुआ है, वो है मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में होना चाहिए आरकेवीवाई के माध्यम से। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक ये जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस का एक अंग है कि मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में हो आरकेवीवाई के माध्यम से, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है और कब तक होने की आशा है? धन्यवाद। जैसा कि आईसीआर के अंदर वैसे तो जीनोम बैंक बना हुआ है पूरे देश का, आज विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरे नंबर का जीनोम है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एक जीनोम बैंक बने जहाँ पर वैरायटी वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके। इसके लिए भी हमने भारत सरकार ने यहाँ पर आरकेवीवाई योजना के अंदर प्रावधान कर दिया है। जो भी राज्य अगर इसके अंदर इस फंड का उपयोग लेना चाहे आरकेवीवाई योजना के तहत, तो वो वहाँ पर जीनोम बैंक की स्थापना कर सकता है। ये अभी इसको स्वीकार, इसके अंदर कोई राज्य अगर करता है तो उसके लिए इसमें फंड में प्रावधान भी है। धन्यवाद। माननीय रिपुन बोरा जी। हाँ, माइक काम वहाँ आ जाए। आप शायद गलत जगह रहे होंगे इसलिए माइक काम। Thank you, sir. Sir, last few days I have been trying to get one supplementary, but I am fortunate enough. This time my turn has come. Just to clarify, so, people come. Just to clarify, if there are other members following your party, I have to see all of them. Anyway, please. Sir, no issue. Please. So just my question is to the Honorable Minister. In the reply, the Minister has said that the Swaminathan Committee has recommended all total 201 recommendations, and out of that, government has already taken action on 200. But in the reply, it is written here, but in the reply, Minister has said that all total 215 recommendations have been made, and out of that, 14 is yet to be implemented. So why this difference?
why this difference is there. So I want to know from the minister. Thank you, विपुन जी. जी महोदय जी, ये जो रिकमेंडेशन थी वो स्वामीनाथन आयोग में स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें तो 214 रिकमेंडेशन पेश की थी, लेकिन जो अंतर मंत्रालय की कमेटी थी 2007 में उसने निर्णय लिया कि इसका ऊपर हमें कुछ और कम करने चाहिए। तो कम करने के लिए उन्होंने कौन सी अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है रिकमेंडेशन को, तो उसमें उन्होंने जो कम की वो मैंने अभी आपको बताई है मेरे पहले, और उसी को लेकर आज भारत सरकार ने उसके बाद में भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उस कमेटी ने अस्वीकार किया उसके बावजूद भी इसको स्वीकार करते हुए उसके ऊपर कई ऐसे बिंदु जिन पे काम किया गया, जिसमें मैंने एमएसपी का आपको उदाहरण दिया है। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी. You have asked question. So yes, please. Sir, in respect of the minimum support price is concerned, Andhra Pradesh is an agrarian state, and most of the farmers are depending on paddy culture. And due to the present scenario, after 2019, there are so many suicides committed by the farmers due to lack of minimum support price and also storage capacity in the state of AP. And suicides are increased. Now our Honorable CM advised not to raise paddy crop. If that is so, what steps you have taken to prevent the suicides? Whether there is any proposal to increase the minimum support price for the welfare of the farmers? Thank you. माननीय सभापति जी, सदस्य की चिंता निश्चित रूप से किसानों के प्रति है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के किसान किसी भी जिन्स को पैदा करता है, उस जिन्स का वाजिब दाम उसे मिलना ही चाहिए। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी है, सरकार की खरीद की व्यवस्था भी है। गेहूँ और धान पहले से अधिक मात्रा में खरीदा जा रहा है, अब दलहन और तिलहन इनको भी खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मोटे अनाज को भी कोई राज्य अगर पीडीएस में शामिल करके अपने उपभोक्ताओं को बांटना चाहता है और वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हम पीडीएस में हम इसे बांटेंगे तो मोटा अनाज खरीद लिया जाए, तो केंद्र सरकार उसको भी अनुमति प्रदान करती है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, पहले भी यह बताया जा चुका है कि कुल मिला के लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय सरकार ने 18-19 में लिया। उसका लाभ पूरे देश के किसानों को 22 जिन्सों पर मिल रहा है और लगातार सरकार की ये कोशिश है कि कुल मिला के एमएसपी पर दाम मिलना एक पक्ष है, लेकिन किसान को फायदे में लाना उसकी चौतरफा मदद करनी चाहिए। इसलिए पीएम किसान योजना, एफपीओ, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब इसीलिए प्रावधान किए गए हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान की ज़रूरत है वो गांव में उसको नज़दीक मिले, जिससे फसल के उपरांत जो उसका नुकसान होता है वो उस नुकसान से बच सके और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सके। इसलिए चौतरफा प्रयत्न किए जा रहे हैं किसान की समृद्धि के लिए। धन्यवाद। माननीय प्रसन्नाचार्य जी। My question is very specific. In regard as far as the recommendation of the Swaminathan Commission is concerned, there are two views. Government says that it is implementing the Swaminathan Commission so far the MSP recommendations are concerned, but the farmers of the country do not agree to this. And one of the demand of the agitating farmers were to give a legal protection to MSP. I would like from the Honorable Minister, the Cabinet Minister himself, whether the government is considering to bring a bill in this House to give a legal protection to MSP so that any violation of MSP will be subject to legal action. Thank you. सभापति महोदय, आचार्य जी ने एमएसपी की बात की है। मैं आपके माध्यम से देश भर को बताना चाहता हूं कि 18-19 से पहले कोई ऐसा बड़ा मैकेनिज्म नहीं था जिसको एमएसपी को समय समय पर परिमार्जित किया जाए या किसान के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की, उन रिकमेंडेशन में भी 14 रिकमेंडेशन ऐसी थी जिसको अंतर मंत्रालयीन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया
उसमें एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी जिसे नहीं माना गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बाद में आने के बाद 18-19 में स्वीकार किया और निश्चित रूप से एमएसपी अब बढ़कर मिल रही है। और एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। ये निर्णय अनेक वर्षों से चल रहा है और पिछले 7 वर्षों में एमएसपी पर जिंसों की खरीद भी बढ़ाई गई है और एमएसपी को पहले से दोगुने दाम दिए गए हैं। और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भी 2,37,000 करोड़ रुपया किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए दिया जाए, ये भी प्रावधान किया गया है। जहाँ तक गारंटी कानून का सवाल है तो मैं सदस्य को और देश को और किसान संघों को ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने इन सब विषयों पर विचार करने के लिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 35, माननीय श्री नीरज डांगी जी। क्वेश्चन नंबर 35। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर, क्या यह सही है कि एनएमआई के आंकड़ों के अनुसार सिरेमिक ग्रेड चाइना क्ले का देश के कुल भंडार का 19% भंडार राजस्थान में है? यदि हां तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सिरेमिक उद्योग स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रश्न मूल प्रश्न के साथ इसका संबंध नहीं है, लेकिन बिल्कुल है। ये बताइए जरा कैसे है, हम भी देख लें। प्रश्न के साथ, मूल प्रश्न के साथ सिरेमिक का तो विषय भी नहीं है आपके प्रश्न में, लेकिन ये सभी को ये जानकारी है कि सिरेमिक गुजरात, राजस्थान वगैरह में काफी सर अच्छी मात्रा में। सर उद्योग राजस्थान में स्थापना करने की बात है, उसी से कनेक्टेड है प्रश्न। हाँ, तो उद्योग के ऊपर मैं आ रहा हूँ, पर मैंने कहा सिरेमिक का जिक्र नहीं है। राजस्थान और गुजरात दोनों में सिरेमिक के अच्छे डिपॉजिट्स होने के कारण कई इंडस्ट्रीज दोनों राज्यों में आई हैं। लेकिन जैसा मैंने जवाब में बताया, केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं से अलग अलग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम्स, योजनाएं समय समय पे लेके आती है। लेकिन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगना, किसने लगाना, लोकल लेवल पे क्या उसको प्रोत्साहन देने के लिए करना, ये राज्य सरकार का विषय है। और राजस्थान राज्य सरकार इसमें पहल करे तो मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य होगा। हर प्रदेश ने अपने अपने एरिया में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ के, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मूलतः इंडस्ट्री का बड़ा प्रभाव है उसको प्रोत्साहन दिया है। जैसे गुजरात में मोरबी में बहुत बड़े पैमाने पे सिरेमिक इंडस्ट्री ग्रो करी है। वो कोई केंद्र सरकार उसके लिए योजना नहीं बनाती है, राज्य सरकार प्रोत्साहन देती है, राज्य सरकार उद्यमियों को एनकरेज करती है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद ने राज्य सरकार से बात करके किस प्रकार से वो भी, क्योंकि सिरेमिक की डिमांड बहुत है, विश्व भर में डिमांड है। भारत के सिरेमिक प्रोडक्ट्स आज हजारों करोड़ के देश के बाहर एक्सपोर्ट भी, निर्यात भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर राजस्थान इस पे चिंता करे तो बहुत स्वागत योग्य होगा और संभावनाएं भी अच्छी हैं राजस्थान। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, पुनः वही क्ले पे है। क्या यह सही है कि देश में काउलिन जो चाइना क्ले है का प्रसंस्करण ज्यादातर पारंपरिक तरीकों जैसे लेविगेशन और धुलाई द्वारा किया जाता है? यदि ऐसा है तो भारत सरकार भविष्य में प्रोसेस्ड काउलिन की मांग को पूरा करने के लिए हाईटेक प्रोसेसिंग स्थापित करने के क्या प्रयास कर रही है? ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार एक प्रकार से योजनाएं अलग अलग जनरल स्कीम्स बनाती है जिसके आधार पे लोग अपनी इंडस्ट्री किधर लगाना, क्या लगाना तय करें। उदाहरण के लिए राजस्थान में आपने सिरेमिक की बात कही, तो जयपुर में ब्लू पॉटरी काफी बड़े पैमाने पे चलती है। इसी के हिसाब से नागौर में मकराना मार्बल का अच्छा प्रभाव है। तो अलग अलग क्षेत्र में लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो, उसके लिए केंद्र पूरे देश भर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से
प्रोत्साहित करती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या प्रोत्साहन देना जिससे वो इंडस्ट्री वहां पे और बढ़े, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है, काम भी है। केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए हम रॉडटेप स्कीम या ROSCTL के माध्यम से जो स्टेट के टैक्सेस बर्डन होते हैं या उस प्रोडक्ट पे लगते हैं उसको वापस देने का काम केंद्र सरकार करती है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन हो। कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 14 क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, जिसकी जानकारी सभी के समक्ष है, मैंने उत्तर में भी दी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 74,000 करोड़ की स्कीम, शायद पहली बार देश में इतनी बड़ी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की आई है जिसमें भी सेरामिक का इस्तेमाल होने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ अब केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं सामने हैं, उसमें अब प्रदेश आपस में कितना जल्दी उस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्कीम्स लाते हैं, उससे तय होगा कि इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होगी। उदाहरण के लिए एक टेक्सटाइल का बताना चाहूँगा माननीय सदन को आपके माध्यम से कि हमने टेक्सटाइल में PM मित्र इस नाम की एक स्कीम लाए हैं, जिसमें 7 टेक्सटाइल के बड़े पार्क्स 1000 एकड़ के बनाने जा रहे हैं। अब उसमें हमने राज्यों के बीच में एक स्पर्धा बनाई है कि राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, कौन से राज्य टेक्सटाइल क्षेत्र को ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन देने के लिए आगे आते हैं, ज़मीन सस्ते में या बिना शुल्क के उपलब्ध कराते हैं, कौन से राज्य बिजली कम कीमत पे लंबे अरसे तक देते हैं। तो अलग अलग तरीके से राज्यों के बीच में स्पर्धा हो और उस स्पर्धा में से हम तय करें कि कहाँ पे ये टेक्सटाइल प्रमोशन पार्क है। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, Chairman, sir. हाँ। I wish to ask Lok Sabha, sir. हाँ, from Lok Sabha. So I would like to ask the Honorable Minister that despite a long-standing demand to lessen trade deficit, there has been a decline in budget on export promotion schemes. How does the government plan to solve this problem with particular reference to Rajasthan industry? I think it's a very good question, but I have been on record on more than one occasion to say that no country in the world can survive beyond a point of time only on clutches when it comes to export promotion. India, over a period of time, has been promoting exports through subsidies, but that has not really given us the desired result or given us the huge impetus that one would have expected. In fact, the reality is that every nation has certain products, certain services, which are our strength area. Every theory in the world says that one should focus only on industries where you have competitive or comparative strengths. And those should be the products on which we focus our exports. India has moved more into an interconnected world where such subsidies are actually not even permitted under the WTO. We've had instances of India also being taken before the WTO on export subsidies. And therefore, our approach is that we reimburse the taxes or cesses or duties that are loaded on the product by the states. As far as the central government is concerned, usually most products are under the GST, so it automatically gets refunded when you export the product. But should there be any other tax which is levied on any export product or which is not moderatable or reversible in the form of refund, we are giving back to the exporters in the form of a RODTEP scheme, which is the remission of duties, taxes, and levies and cesses. And we have found very good acceptance of this scheme across the country. Based on that, exports have also been growing. And while Honorable MP feels that we have reduced our export subsidies, the reality is this year India is going to see a record performance in exports. We have already, up to 31st March, crossed $334 billion of exports, which is higher than any full year ever in the past.
and we are well on track to go to $400 billion export in the current year. My compliments to all the exporters, all the industry participants, including from the state of Rajasthan, who have contributed in a big way. I would urge all the states to support economic activity through exports, because truly export promotion is the way by which we'll be able to get more and more jobs in the system, more and more economic activity. I think it is the collective effort of the center and the states, and we are finding very good traction across the country working together. Thank you. Question number 36, माननीय कैलाश सोनी जी. प्रश्न नंबर 36. Laid on the table of the House. First supplementary, पहला supplementary. माननीय मंत्री जी, देश के बहुत सारे रेल मार्ग ऐसे हैं जो लाभप्रद नहीं हैं, जो बनाए गए हैं. यहाँ बुंदेलखंड एवं अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा क्षेत्र गोंडवाना, लगभग 5000 ग्राम जो है रेल कनेक्टिविटी से वंचित है. तब ये मार्ग क्यों नहीं बनाया जा सकता? थैंक यू. माननीय सांसद महोदय का जो सेंटिमेंट है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी आपके माध्यम से सभी के सामने जानकारी रखना चाहूँगा. रेलवे के लिए मध्य प्रदेश में 2009 से 14 में मात्र 632 करोड़ पर एनम एलोकेशन होता था. बढ़ा के 2014 से 19 4213 करोड़ किया गया, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी. और 22-23 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए 12,110 करोड़. आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपकी इमोशन है वो मैं उसको संवेदनशीलता के साथ लेता हूं, और माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ बैठे और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे. अगर कोई संभावना निकलती है अनवायबल प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की, तो संभावना पे मिलकर हम विचार करेंगे. दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय सोनी जी. एचबी कामत ने इसको बुंदेलखंड का दरवाजा कहा, करेली. सवाल. और साउथ की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि आपकी लागत 4-5 वर्षों में वसूल हो जाएगी. सवाल पूछें. ये ऑलरेडी एनएचएआई से लगा हुआ हिस्सा है और ये लोकोपयोगी है. इससे साउथ की दूरी बहुत कम हो जाएगी. अभी करेली से ये पॉइंट्स माननीय मंत्री जी से वायबिलिटी पर जब आप बात करें तो चर्चा करें. सवाल पूछिए. आपके जवाब के हिसाब से करेली से अभी इटारसी से जुड़ा है, जहां 12 घंटे का समय लगता है, सीधे 3 घंटे का समय लगेगा. इसलिए ये अत्यंत लोकोपयोगी है. क्यों नहीं बनाया जा सकता? धन्यवाद माननीय सोनी जी. धन्यवाद. होना है सर. आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सजेशंस थे उनके. माननीय जवाहर सरकार जी. अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन कहो तो नहीं पूछेगी. हाँ, ये माइक इज वर्किंग. Thank you, sir. Since the question is on railway lines within Madhya Pradesh, may I ask the Honorable Minister to inform the House how many railway station halts have been put on hold in the name of COVID? You see, COVID has gone through, we have gone through a lot of difficulties in the name of COVID, but one of the things that the railways is trying to do is to bring in economy by stopping smaller stations. You have put your question. That cannot be a permanent, that's a social obligation. You have put your question, Jawahar. Sir. Thank you. And that would apply to the rest of India. Please. Asked a question which is not related with the main question. Yes. I can send the data as and when we can meet and discuss it. Sir. Thank you. माननीय अजय प्रताप सिंह, क्वेश्चन मध्य प्रदेश से है, इसलिए आपके सवाल इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड होने चाहिए. माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है. इसका रेल खंड जो सीधी से सिंगरौली, इसका पहले अलाइनमेंट सीधी से बरगवा तय किया गया था, बाद में इसको परिवर्तित करके सीधी से गोंदवाली कर दिया गया. इस अलाइनमेंट परिवर्तन के कारण क्या है और क्या इससे लागत बढ़ी है अथवा घटी है? धन्यवाद. अगर बढ़ी है तो इसके लिए धन्यवाद. जिम्मेवार कौन? धन्यवाद. सभापति जी, अवश्य ये प्रश्न
मध्य प्रदेश का है, ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है, मूल प्रश्न से लगा हुआ नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट ललितपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली, एक सेकेंड, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यू लाइन है देश की, 541 किलोमीटर की। इसका अलाइनमेंट जैसे जैसे ज़रूरतों के हिसाब से और विशेषकर इंडस्ट्री और पैसेंजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके अलाइनमेंट बीच में चेंज किया गया, उसके कारण कॉस्ट भी बढ़ी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अभी बहुत अच्छी है और इस वर्ष जो रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए, उस रिकॉर्ड एलोकेशन के कारण इस प्रोजेक्ट में और भी प्रोग्रेस तेजी से होगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती तो माननीय सांसद महोदय मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, उसको हम समाधान करेंगे। धन्यवाद। माननीय राम विचार नेताम जी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश से ही कट करके हम छत्तीसगढ़ गए, और इसमें पर सवाल मध्य प्रदेश का है। अधिकार बनता ही है महोदय, छत्तीसगढ़ के किन किन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया, क्या उन मार्गों में चिरमिरी बरवाडीह का लाइन भी सर्वेक्षित है, उसकी स्वीकृति की क्या स्थिति है? धन्यवाद। आप दे सकते हैं सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। मेरे तो ओपन डोर्स है। माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। सर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री केजे अल्फोंस। Sir, thank you for this opportunity. Even though I have start question listed today, but I know it would never come up. Day for Please today, so put your question. it had the same fate, sir. Thank you so much. Sir, I live in the heart of Delhi, and I had one of these national carriers. That was my telephone. I couldn't get a call, so I had to come out to the garden to make a call. Sir, today, past 1 week, I've been trying to make calls. I have possibly the biggest telephone operators in the country, and I use their phone. I can't get a telephone call through at all. Sir, in Cochin, where I go and live in the government guest house, it's right in the heart of the city. I can't get a call through. Sir, is it a problem with the spectrum, or is it a problem with these service providers? Sir, Honorable Minister, would you kindly take steps to rectify this, please? Thank you. प्रश्न सर ट्राई से संबंधित है। ट्राई में ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए एक स्पेशल सेल है। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा उस सेल में अपनी कंप्लेंट रखे और ट्राई उसके ऊपर विचार करेगी। डॉक्टर वी शिवदासन। Whether government has any share in Vodafone, then if government sector one company is here. If yes, then please explain the details. सर, टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है सर पिछले कई वर्षों से, और उसके पीछे कारण क्या है वो हमारे मित्र अच्छे से समझते हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। इन परिस्थितियों के कारण गुजरने के कारण आज डिस्पाइट हेवी ग्रोथ इन द टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट, बहुत सारी कंपनियों की आर्थिक हालत में एक समस्या आई। अब सरकार का रेवेन्यू कहीं पे कॉम्प्रोमाइज न हो, सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज न हो, फिर भी एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो सके, ये सब विचार करके बहुत ही सोच समझ के इतना, मेरे ख्याल से जो सितंबर के रिफॉर्म्स की बात जो आप कर रहे हैं, that's one of those very well thought out, really going deep into the problem and bringing up a solution where government's revenue is not compromised at all. With that philosophy, those reforms were taken out. In that, one of the options which was given to the industry was that the interest which you have to pay for the 4 years, that interest can be paid either in you pay it or you give your shares in lieu of that. So that's the thought process with which that option was given. 3 companies have exercised that option, sir. We are examining the letters that they have given. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Sir, I am well aware of the various initiatives taken by the government to spread telecom revolution in remote and rural areas of India. Sir, the BharatNet project would be a good example, which is implemented to provide broadband connectivity to all the panchayats. But sir,
Even today, a quarter of the Gram Panchayats in the KBK districts of Odisha, which is largely tribal dominated and Naxal infested, are unconnected. They do not have telecom connectivity despite repeated reminders and address in this house. So my request and question to Honorable Minister is, will he come out with a special scheme to expedite telecom connectivity in the KBK districts of Odisha? Thank you. 7,000 new telecom sites in the country, especially in areas which are not connected. And I'm so glad that Odisha, because of various historical reasons and because of some of the areas which are very difficult, especially the forested areas, KBK areas, which Honorable Member has referred to, 3,933 sites were sanctioned for Odisha. It's a great thing. I request Honorable Member that please approach the state government so that the sites can be easily given, can be quickly given. We can start raising the tower. And BharatNet, sir, in Odisha, the BharatNet project is implemented by the state government. I'll request the Honorable Member once again, please work through the state government so that the implementation can improve. Implementation is not at all satisfactory. Thank you. Question number 38, Manya Kanak Mehla Ravindra Kumar ji. Number 38. Manya Mantri ji. Railway, it's related to railway. So the answer is 38. 38, sir. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, as per item 18 of the schedule 13. Sorry, question hour is over. One more, sir. Question hour is over. Supplementary. Please, no. Sorry. Statements of the Public Accounts Committee, Sri Bhuneswar Kalita ji, please lay. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. The reports of the Public Accounts Committee 2021-22, serial number 1 to 19. Thank you, sir. Thank you. Manya Prasanna Acharya ji, discussion on the motion of thanks on President's address. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the occasion to speak out my mind about the address of the Honorable President of India to the joint session of both the House in the beginning of this budget session. Sir, it is customary that the Honorable President of India will address both the Houses at the beginning of the session. And it is also very clear that whatever the President speaks on this occasion, it is only a speech prepared by the government and approved by the cabinet of this country, sir. But, sir, I must thank the President because in the beginning of his speech, one very important thing the Honorable President has said, and he has said that I salute all the great personalities for their contribution in the development journey of our country in these 75 years of independence. I put emphasis on this very sentence of the Honorable President because there are some people in this country who refuse to recognize the contribution of all those great leaders who laid the foundation of a new India after independence, including the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. There are a whole of leaders in this country who not only fought for our independence, but after independence, they took over and laid the foundation to build up a new India, a prosperous India, a progressive India, a secular India, a India belonging to all sections of the people, all sections of the citizens. Therefore, sir, I think the President has very rightly, at the outset of his speech, has saluted all those great personalities for their contribution in the last 75 years of our independence. Sir, for one thing, I appreciate the attitude of this government, Modi's government, that in some respect, they are taking a very nationalistic approach. And sir,
It is a very, very good decision that Netaji Subhash Chandra Bose, we all know about his contribution to the freedom struggle of this country. And many people think that had Netaji been alive and had Netaji been in the helm of the affairs of the country after independence, the shape of our independent India would have taken a different direction. But unfortunately, that couldn't happen. And unfortunately, sir, there are some people in this country, I don't want to indicate who are those people, in order to eulogize some other leader, I think the contribution of Netaji and some other leaders of Netaji were very conveniently forgotten. People refuse to recognize their contribution to this country. So this government has very rightly taken a decision. I therefore compliment the Honorable Prime Minister that the Republic Day celebration will start from the birthday of Netaji, that is 23rd of January every month. It is a very, very welcome decision this government has taken. So another very important decision and very impressive decision this government has taken to observe Bir Bal Divas on 26th December in the memory of sacrifice of Sahib Dazad, the son of the 10th Guru Govind Singh, for their unparalleled sacrifice during the Muslim era. Sure, there are some other Bal Birs in this country which sacrifice is memorable, that cannot be forgotten. I will cite one example from my own state, Odisha. There was a boy, his name was Baji Raut. He was an 11, 12-year-old boy. And he bravely faced the bullet of the Britishers that time. He refused, he was a boatman. His father was a boatman. His father was yelling. Therefore, he took charge of the boat. And when the British soldiers came to the river bank and asked the boy to open the boat to take them to the other side so that they can go and invade a village and arrest some freedom fighters, this 12-year-old brave boy, Baji Raut, refused. And he was shot at. And he became a Shaheed. So there are some other such Bal Birs in the country. My point is, all the sacrifice history of such Bir Bals of this country should be collected, and memorials should be constructed in their memory, and history should be give proper place to the sacrifice of such people. Therefore, it is a very good step that the government has started observing the Bir Bal Divas. I therefore also compliment this government, sir. Sir, the Honorable President, if you go to para 22 of the speech of the Honorable President, he has said about the farmers, empowering the farmers of this country. A very, very welcome thing, sir. The President has mentioned about empowering the farmers and rural economy of the country. I'm not going to delve in detail about the rural economy, sir, because I know you will not give me time. I have very limited time. And other members have very elaborately yesterday and day before have explained what is the rural economy in this country now. And the President has also very complimented the farmers, sir. Despite pandemic, farmers produced more than 30 crore tons food grains, and 33 crore tons of horticulture produced in 2020-29, despite the pandemic situation, sir. And agriculture export reached a record level and registered a growth of more than 25%, valuing rupees 3 lakh crore. This is the contribution of the farmers of this country. In the question hour, we were discussing about Swaminathan Commission, minimum support price pertaining to the farmers, sir. Sir, if the farmers can contribute so much to this country, in return, what is getting? What the farmers is getting? Farmers' income have not been doubled. This is the promise of this government that by 2022, farmers' income will double. I will ask pertinently to the government. Can the government say that by now it has been able to double the income of the farmers? Can they say it? No, sir. The farmers of the income has not yet been doubled. Sir, had the farmers' income been doubled, you'll be astonished to know that why the farmers of the country are still committing suicide every day. Sir, it is not my report. It is the report of the National Crime Record Bureau. It is NCRB data. And according to the NCRB data,
as many as 42,480 farmers and daily wagers committed suicide in 2019. This 2019 report, not the latest report, which is an increase of 6% from the previous year. So every year the number of farmers' suicide is going on. Why? If they are getting the MSP, now in the question hour I put the question, and other honorable members also put the question about MSP. I think government gave a very evasive reply. Government is not coming out with a reply whether they will bring a law in this house to ensure MSP legal coverage to MSP. Government refused to do that, and that is one of the demand of the agitating farmers of this country, sir. And most of the farmers in this country, they are small and marginal farmers, and they are committing suicide. The farm laborers are committing suicide. If the economic standard of the farmers, the government has been able to increase, then why the farmers is compelled to go for committing suicide? Has the government an answer for this, sir? So this is a very pertinent question, sir. The plight of the farmers, I don't think, had the farmers been in a happy condition, in a very sound economic condition, thousands and lakhs of farmers would not have been gone for agitation in the border of this country. Sir, just now the railway minister is very much present here. I will compliment the railway minister that he has given a good amount of sanction to the different projects of Odisha, sir. I compliment him. Sir, but one thing, sir, why state motherly attitude is being shown to Odisha, my own state? Sir, I will give only one example. Our CM has repeatedly asked for unification of all railway assets over Odisha state under East Coast Railway headquarters at Bhubaneswar. But we are told that zones are not formed on state boundary line. The reply of the government is, zones are not formed on state boundary line. Okay, sir, I agree. Zones are not formed on state boundary line. But now the South Coast Railway zone has been formed on state boundary line. And at which cost? At the cost of the East Coast Railways. Why this discrimination, sir? When our request has been turned down, then why is in some other state you are going for state level boundary and constituting the railway zone, sir? Sir, you have taken away a portion of Andhra Pradesh from East Coast Railway. Then why Raurkela and Jharsuguda, etc.? This is our old demand. Now Jharsuguda and Raurkela, it is in Chakradharpur division outside Odisha. So our request is, you bring Raurkela and Jharsuguda and other areas, constitute a separate division, merge it with the East Coast Railways. The reply is, railway zones are not constituted on state boundaries. If it is not constituted on the basis of state boundaries, then why it happened in Andhra Pradesh? So therefore, sir, we feel that in some respect, discrimination is meted out to my state, Odisha, sir. Sir, the President has mentioned about forming two All India Institute of Medical Sciences in Jammu, one in Jammu and one in Kashmir. I welcome it, sir. It is a very, very good decision, sir. But, sir, there are some other areas in this country where health services are very poor. I will cite one example. It is Sundargarh in Odisha, sir. It is a tribal-dominated area, and it is adjacent to Jharkhand, which is also a tribal-dominated area. So, the request of my state government, my Chief Minister Naveen Patnaik has been all the time requesting the central government to open an AIMS Institute in Sundargarh, sir. I welcome the decision of the government that two AIMS are being opened, one in Jammu and one in Kashmir. But some other areas in the country are there, mostly dominated by the tribal population, where health services are poor. So therefore, our request is to open a AIMS at Sundargarh as well. Sir, there are some states in the country, Odisha, Bihar, Jharkhand, they are mining state, mine-producing state, mine-bearing states, sir. And Government of India is collecting a clean environment cess. Earlier per ton, they were collecting 200 rupees. Now it has been enhanced and they are collecting 400 rupees per ton collected by the center. Sir, Odisha government have requested for renaming the cess
as environment and rehabilitation says, so we are suffering. The mine-bearing states are suffering. Our environment is polluted. Our trees are cut. And Government of India is collecting the cess in the name of clean environment cess. And we, this mine-bearing state, we do not get a single pie on that. So my Chief Minister Naveen Patnaik has always been requesting that rename it as cess, environment and rehabilitation cess, and earmark at least 60% of coal for the coal-bearing states. This has been our request. Government of India is not considering. Sir, cess and surcharge. Sir, the share of this gross tax revenue for the Union government increased from 7.5% to about 19% in the last 20 years. Cess and surcharge. Government of India is imposing cess and surcharge on petroleum, on petrol, on diesel, on liquor product, and some other products also. And the increased trend of center to rely on cess and surcharge denies the states their rightful share in tax devolution. Because the cess and surcharge amount, it is not going to the divisible pool. And the states are not entitled to get a share of it as per the recommendation of the Finance Commission, sir. So our request to the central is that the revenue thus generated should form of the divisible pool so that the concerned states can get a benefit of that thing. Sir, during the pandemic, okay, the central government spent a lot of money. The state government as well spent a lot of money for that, sir. But from that fund will come. So that this is our genuine and rightful demand. So I urge upon the central government to consider. Sir, the Honorable President in his speech has mentioned about women empowerment. And the President says, women empowerment is one of the top priority of the government. Sir, it is just contrary of the fact, sir. Sir, okay, Beti Badhao, Beti Bachao, Beti Padhao, lot of slogans are being there, sir. Sir, I will say only one thing, sir. Okay, Triple Talaq bill was passed by this house. And we said that among the minority communities, Muslim communities, lot of superstitions are there. We have to deal with that. And everybody supported the Triple Talaq bill, sir. Sir, I will put one question here. What happened in Sabarimala in Kerala? What was the judgment of the Supreme Court? What was the stand of the Bharatiya Janata Party? There are two All India largest national political parties. One is Bharatiya Janata Party, one is Congress Party. What was our stand on that? On the one hand, we say about women emancipation. And on the other hand, we support preventing the women from entering into a table. We are not even prepared to go by the judgment of the Supreme Court. What was the Supreme Court judgment? Supreme Court held about Sabarimala that any exception placed on women because of biological differences violates the Constitution. It violates the right to equality under Article 14 and freedom of religion under Article 25. Why this double standard? On the one hand, we say about women emancipation. On the other hand, we prevent the women from entering into a temple and pray there and offer their prayer to the Lord. So this is double standard, sir. So I think we should, about women reservation bill, sir. Sir, this house passed this women reservation bill in 2010. But still that bill has not become an act, sir. Sir, women, you'll be astonished to know, sir, women represent 10.5% of the total members of the Indian Parliament. It is the latest. What is women representation in Rajya Sabha and in Lok Sabha, sir? And in the legislative assemblies across all the state, it is a pitiable 9% only. If you take into consideration the women representation in all the assemblies together, it is hardly 9%. And it is not my report, it is the report of Election Commission of India, sir. Sure, even in Muslim countries, those who are considered to be very conservative people, even in Muslim countries, women representation is much more than what we have here. And even Pakistan and Bangladesh, two Muslim-dominated countries, they have passed the Women Reservation Bill Act. But we are reluctant. Why? On the one hand, we say of women emancipation. On the one hand, we say of Beti Badhao, Beti Badhao, Beti Bachao.
On the one hand, we say up bringing the women to the mainstream of the society, but still we refuse to give them their political right. Why? It was done by them also. It has been done by these people also. So why not this government is bringing this bill? What prevents them? So this is, I'm sorry to say, this is just hypocrisy. So I urge upon this government, it is high time, please bring this bill of women reservation. Sir, your time is over, and I'm also concluding, sir. Yes. Very shortly, I'm concluding. Give me 2-3 minutes more time, sir. Sir, one important thing I want to say, that Odisha is a cyclone-prone state. Natural calamities all the time hitting Odisha. You will be surprised to know, during the last 100 years, we have been hit by natural calamity for more than 90 times. Flood, drought, cyclone, super cyclone, and that is devastating our economy. That is devastating our economy. So we have been requesting, our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has all the time requesting central government to give a special category status to states like Odisha. If not special status, at least a special focus category status to Odisha, and treat us as part of the northeastern states and the Himalayan states, and give that economic benefit to the state like Odisha that is not being heeded by the central government so far, sir. So, sir, last point I will say, sir, about federalism. This is a federal country. Our constitution provides for federalism, sir. But we feel this House knows it. In every bill, there is one or two provision taking away the right of the state government. What type of federalism this is, sir? And the latest decision the government has taken, that at any moment, central government can withdraw any IS officer from any state without the consent of the particular state. What type of federalism this is? What type of federalism this is? So you are not strengthening the federal character of our constitution of our country, we are weakening it. So therefore, my submission to the central government,